Atore basta sudah apa juga itu. Atore basta pun bang. Di sana basta naga yang dimana dia. Di bawah hari bang naga basta.
आज के इस वीडियो में वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा ध्रुव राठी एकेडमी पर दिवाली धमाका सेल चल रही है। मेरे सारे कोर्सेज पर फ्लैट 50% ऑफ, यानी कि मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स जहां पर आप प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना है, या फिर मेरा YouTube
ट्यूटोरियल कोर्स जो आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना सिखाता है, कैसे आप यूट्यूब को एक पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम करियर बना सकते हैं, या फिर मेरा 10.5 घंटे का हाईली डिटेल्ड मास्टर एआई चैटबॉट्स कोर्स जो आपको चैट जीपीटी, जेमिनी, डीपसीक जैसे एआई टूल्स थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ सिखाता है। इन सब में से आप कोई भी कोर्स खरीदो, 22 अक्टूबर तक आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। पूरे साल का बेस्ट डिस्काउंट, और इतना ही नहीं, मेरे एआई प्लेटफॉर्म एआई फिएस्टा पर भी 41% ऑफ मिलेगा आपको इस सेल में अगर आप उसके एनुअल सब्सक्रिप्शन को खरीदोगे। जरूर जाकर चेकआउट करना, इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। और अब अपने टॉपिक पर आते हैं। स्लीप वॉकिंग को मेडिकल टर्म्स में सोमनाम्बुलिज्म कहा जाता है। ये एक प्रकार का स्लीप डिसऑर्डर है जो नॉन रेम स्लीप के दौरान होता है। असल में बात क्या है दोस्तों, इंसानों में नींद को मोटे-मोटे तौर पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसे रेम स्लीप भी कहा जाता है, और दूसरी होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी एनरेम स्लीप। जैसा कि आप इनके नाम से समझ सकते हो, रेम स्लीप में जब हम सोते हैं तब हमारी आईज रैपिडली मूव करती है, आंख बंद होती है लेकिन आई बॉल बड़ी रैपिडली हिलती रहती है। और एनरेम स्लीप में ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले जब हम सोने जाते हैं रात को, हम एनरेम स्लीप में एंटर करते हैं। एनरेम स्लीप की अपने आप में 3 अलग स्टेजेस होती है। पहली स्टेज में हमें हल्की हल्की नींद आने लगती है और किसी आवाज या एक्सटर्नल एक्टिविटी पर रिएक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है। फिर धीरे धीरे ये नींद गहरी होती जाती है और एनरेम स्लीप सबसे गहरी नींद होती है। इस स्टेज में किसी सोते हुए इंसान को जगाना काफी मुश्किल होता है, और अगर जगा भी दिया जाए तो वो इंसान कंफ्यूज और डिसओरिएंटेड फील करने लगता है। फिर एनरेम की तीनों स्टेजेस के बाद इंसान रेम स्लीप में एंटर करता है और सपने इसी स्टेज में आता है। इस स्टेज में हमारा हार्ट रेट बढ़ने लगता है और ब्रेन रिलेटिवली ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हमारा दिमाग मेमोरीज को कंसोलिडेट करने के लिए और इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए काम करने लगता है। यही कारण है सपने आने के पीछे। वैसे सपने आना अपने आप में एक और डिटेल और अलग टॉपिक है, उसकी चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन स्लीप वॉकिंग की बात की जाए तो स्लीप वॉकिंग रेम स्टेज में नहीं होती। स्लीप वॉकिंग होती है सबसे गहरी एनरेम की स्टेज। एक इंसान जो अपनी नींद में चलने लगे, हो सकता है उसकी आंखें खुली हो और वो अपने आसपास के इवेंट्स को लेकर रिएक्ट कर रहा हो। इसे देखकर कुछ लोगों को लग सकता है कि ये तो जागा हुआ है, ये कॉन्शियस है, लेकिन असलियत में उसके सारे सेंसरी परसेप्शंस लगभग बंद होते हैं। यानी कि उसकी आंखें खुली होंगी लेकिन वो चीजों को देख नहीं पाएगा, सूंघ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। अपनी हैबिट के चलते और हल्की फुल्की ठोकर खाकर वो रास्ते में रखी चीजों से बचकर निकल जरूर सकता है, लेकिन रियलिटी में वो कुछ सोच समझ नहीं रहा होता। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो स्लीप वॉकर्स की आंखें ऊपर और अंदर की तरफ मुड़ी रहती है और उनके चेहरे पर एक ब्लैंक एक्सप्रेशन रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्लीप वॉकिंग के दौरान हुई घटना जागने के बाद याद नहीं रहती। ऐसे ही बेड पर सोए सोफे पे बैठे बैठे जिंदगी भर में ऐसे रील देखते रहोगे या लाइफ में कुछ करना नहीं। दोस्तों मुझे पता है कि आप वो लोग हो जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन घर में बैठे। अगर किसी इंसान को स्लीप वॉकिंग के दौरान जगा दिया जाए तो वो कुछ समय तक कंफ्यूज और डिसओरिएंटेड रहता है। तब होती है जब आप किसी को एनरेम की स्टेज 3 स्लीप में जगा देते हैं। अब इंसानों का क्या है कि हम लोग स्लीप साइकिल्स में सोते हैं। एक स्लीप साइकिल में ये चारों स्लीप स्टेजेस एक के बाद एक आती रहती है, N1, N2, N3 रेम स्लीप, और उसके बाद N1 आती है। एक स्लीप साइकिल 90 मिनट से लेकर 110 मिनट के बीच तक चलती है। जब आप सोने जाते हो तो फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइट में N3 का जो हिस्सा है वो एक स्लीप साइकिल में रिलेटिवली ज्यादा बड़ा होता है, और जैसे जैसे सुबह करीब आती है रेम स्लीप साइकिल का हिस्सा बढ़ता रहता है। सुबह उठने के लिए, जागने के लिए सबसे कंफर्टेबल रहता है जब आप N1 के हिस्से में उठो। N1 के हिस्से में अगर आपकी नींद खुलेगी तो आप काफी फ्रेश और एनर्जेटिक फील करोगे, लेकिन अगर आप N3 के हिस्से में जागते हो तो आप काफी सोता सोता और ड्राउजी फील करोगे। इसी कारण से आपने अक्सर सोशल मीडिया पर एडवाइस देखा होगा कि अगर आप रात को सोते हो तो या तो 7.5 घंटे सो या 9 घंटे सो, क्योंकि ये स्लीप साइकिल के एंड का टाइम होगा मोस्ट प्रोबेबली। क्योंकि ये कहते वक्त अज्यूम किया जा रहा है कि 1.5 घंटे की स्लीप साइकिल है, लेकिन असलियत में ये चीज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि आपकी स्लीप साइकिल एग्जैक्टली कितनी लंबी है। आपको खुद देखना पड़ेगा कि कितने घंटे सोने के बाद आप फ्रेश फील करते हो। उसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप N1 स्लीप में उठते हो या किसी और स्टेज ऑफ स्लीप में। स्लीप वॉकिंग पर वापस आए तो स्लीप वॉकिंग के एपिसोड्स कुछ मिनट से लेकर कई घंटे तक के हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग रहती है, किसी को महीने में एक बार एपिसोड हो जाता है तो किसी को एक हफ्ते में कई बार। सबसे कमाल की चीज तो यहाँ पर ये है कि कुछ लोग स्लीप वॉकिंग करते करते क्या क्या कर लेते हैं। जैसे कि ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट ली हैडविन का एग्जांपल देखिए। ये भाई साहब स्लीप वॉकिंग करते करते पेंटिंग कर सकते हैं। मजाक नहीं कर रहा, ये एक सच्ची कहानी है। ये जब 15 साल के थे तभी इन्होंने सोते सोते स्लीप वॉकिंग करते हुए
फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेसेस की 3 पेंटिंग्स बना दी। और सबसे अजीब बात यह है कि ये होश में रहते रहते पेंटिंग नहीं कर पाते, सिर्फ नींद में ही पेंट कर सकते हैं। Reed is expressing this by creating artwork. It's just a really nice manifestation of what his more emotional system is doing when it's not inhibited by these frontal areas. इसी तरीके से स्कॉटलैंड में एक केस देखा गया रॉबर्ट वुड का, जो रात में उठकर खाना बनाने लगते हैं। कि नींद में रहते रहते ही ऑमलेट से लेकर पास्ता जैसी डिशेस को तैयार कर देते हैं, जिसके कारण इन्हें स्लीप वॉकिंग कहा जाता है। फेमस इंडियन एग्जांपल्स की बात करें तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी अपने करियर की शुरुआत में स्लीप वॉकिंग की आदत है। सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1990s में जब वो इंग्लैंड में रूममेट्स थे, तब सचिन रात के 1-1:30 बजे उठकर पहले कमरे में एंडलेसली घूमते, फिर चेयर पर बैठ जाते। रूममेट था दोनों इंग्लैंड में, तो एक दिन रात को देखा कि बंदा ना चल रहा है, घूम के चेयर पे बैठता है। जब गांगुली ने सचिन से पूछा कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें नींद में चलने की आदत है। तो यार तू डरा रहा है मुझे, तू क्या रह रहा होता, मैं रात को चलता हूँ, रात को नींद में चल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है दोस्तों कि स्लीप वॉकिंग में हर कोई इतना क्रिएटिव या कोई इतनी हार्डनेस एक्टिविटी नहीं करता। कई बार लोग वायलेंट हो जाते हैं और क्राइम्स कर देते हैं, जैसा कि कनाडा में केनेथ पार्क्स का केस था। इसके बारे में बात मैं आगे वीडियो में करता हूँ, लेकिन पहले जानते हैं कि ये स्लीप वॉकिंग होती ही क्यों है। इंडिया में स्लीप वॉकिंग को लेकर कई सारी अफवाहें हैं। कोई है भूत प्रेत से जोड़कर देखता है, तो कोई कहता है कि पास्ट लाइफ लेकिन असलियत यही है दोस्तों कि इसका किसी भूत प्रेत, पास्ट लाइफ स्पिरिट्स, किसी से कोई संबंध नहीं। स्लीप वॉकिंग एक प्योरली न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना है। ये होता है ब्रेन की इनकम्प्लीट अवेकनिंग से, यानी कि इंसानी ब्रेन का कुछ हिस्सा सोया हुआ रहता है और कुछ हिस्सा जाग जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जब शरीर गहरी नींद में जाने की तैयारी कर रहा हो, जब N3 स्लीप स्टेज में जाने की तैयारी हो रही है, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि ये ट्रांजिशन अच्छे से नहीं हो पाता। गहरी नींद और जागने के प्रोसेसेस ओवरलैप कर जाते हैं, क्योंकि जब कोई स्लीप वॉक करता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जो मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है वो जाग जाता है, लेकिन कॉन्शियसनेस वाला हिस्सा सोया रहता है। इसी रीजन से मोटर एक्टिविटीज करनी पॉसिबल है स्लीप वॉकिंग करते हुए। लोग चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग तो गाड़ियाँ ड्राइव कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं और पेंट भी कर सकते हैं। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि दिमाग के हायर न्यूरल स्ट्रक्चर्स के इन्वॉल्वमेंट के बिना भी ब्रेन स्टेम और सेरेब्रम जैसे पार्ट्स कॉम्प्लेक्स इमोशनल और मोटर बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे शरीर का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपने स्कूल में पढ़ा होगा, हमारी कॉन्शियस विल के बिना, हमारी मर्जी के बिना सांस लेता रहता है। हार्ट रेट और डाइजेशन जैसे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता रहता है। हमारी बॉडी को इन सभी कामों को करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। इसी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की 2 ब्रांचेस होती हैं। एक सिंपैथेटिक ब्रांच जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देती है, यानी किसी खतरे के समय रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करती है, और दूसरी पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करती है। स्लीप वॉकर्स में इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को लेकर 2021 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई। इस रिसर्च ने ये पाया कि स्लीप वॉकर्स में N3 स्लीप के दौरान सिंपैथेटिक ब्रांच में कम एक्टिविटी होती है और पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच एलिवेटेड रहती है, यानी कि रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्सेस ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस काफी कम हो जाते हैं। ये एक बड़ी हैरान कर देने वाली डिस्कवरी थी, क्योंकि इससे पहले तक माना जाता था कि स्लीप वॉकर्स के डीप स्लीप रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्सेस कम और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस ज्यादा होंगे और इसी कारण से वो स्लीप वॉक कर रहे होंगे। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च से इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट सामने आया। फीचर्स थे सरकार 3 फीचर्स। पहला, इन-हाउस सीडीएम जो तेजी से कंटेंट डिलीवर करने के लिए सर्वर्स के वैश्विक नेटवर्क को जोड़े। दूसरा, बेहतरीन लोडिंग स्पीड के लिए लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तीसरा, तेज रेस्पॉन्स टाइम के लिए ऑब्जेक्ट क्लैश डेटाबेस क्वेरी परिणामों को स्टोर करें। गूगल कोर वेब वाइटल्स रिपोर्ट में देखें। हमारे मैनुअल स्कैनर, इन-हाउस डेवलप्ड फायरवॉल और DDoS सर्टिफिकेशन में ऐसी सिक्योरिटी आप कह उठेंगे एकदम झकास। मुफ्त ऑटोमेटिक SSL इंस्टॉलेशन आपकी वेबसाइट को सुरक्षित बनाए रखे ताकि आपके विजिटर्स को लगे कि ऑल इज वेल। ऑटोमेटिक अपडेट्स और बैकअप, क्योंकि बिल्कुल नहीं रहता है। कुछ और रिसेंट स्टडीज के मुताबिक ओल्डर एडल्ट्स में स्लीप वॉकिंग, डिमेंशिया या पार्किंसन जैसी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस
या कॉग्निटिव डिक्लाइन का संकेत हो सकता है। यहाँ पर एक और बड़ी कॉमन मिथ है कि जो लोग स्लीप वॉकिंग करते हैं वो ज़ॉम्बीज की तरह अपने हाथ ऐसे आगे उठाकर चलते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा है नहीं। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन जो लोगों को होता है कि अगर स्लीप वॉकर्स को नींद से जगा दिया जाए तो उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है या वो कोमा में जा सकते हैं। ये बात भी सच नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, अच्छा यही रहता है कि उन्हें नींद से ना उठाया जाए, क्योंकि वो कंफ्यूज और बहुत ज्यादा डिसओरिएंटेड फील करेंगे। अब एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि दुनिया में कितने % लोगों को स्लीप वॉकिंग का ये स्लीप डिसऑर्डर है। इस मेटा एनालिसिस के मुताबिक 6.9% लोग अपनी लाइफ कभी ना कभी एक बार जरूर स्लीप वॉक करेंगे। बच्चों में स्लीप वॉकिंग सबसे ज्यादा कॉमन है। स्लीप वॉकिंग के एपिसोड 7 से 15 साल के मेल्स में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली ज्यादातर केसेस में ये बड़े होने पर बंद नहीं हो जाते। बच्चों में जब स्लीप वॉकिंग होती है तो ये बच्चे स्लीप वॉकिंग करते समय जनरली ज्यादा शांत या सुस्त नजर आते हैं, लेकिन एडल्ट्स में स्लीप वॉक बड़ी क्विक मूवमेंट्स करते हैं, जैसे कि वो किसी जल्दी में हो, वो बड़ी जल्दी में कहीं पर चलने लगते हैं या कहीं पर बैठ जाते हैं। कई बार बड़ी जल्दी को बड़ी मूवमेंट्स देखने को मिलती है जो कुछ लोगों को डरावनी भी लग सकती है। एग्जैक्टली बच्चों और एडल्ट्स में इतना डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है, इसका कारण अभी हमें पता नहीं। साइंटिस्ट इसका रीजन अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको स्लीप वॉकिंग होगी या नहीं, इसके पीछे जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जामा पीडियाट्रिक्स में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक जिन बच्चों को एक पेरेंट की स्लीप वॉकिंग की हिस्ट्री होती है, उनके स्लीप वॉकिंग के 47.4% चांसेस होते हैं। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स की स्लीप वॉकिंग की हिस्ट्री है तो बच्चों के चांसेस बढ़कर 61.5% हो जाते हैं। जबकि ऐसे बच्चे जिनकी किसी भी पेरेंट में स्लीप वॉकिंग नहीं देखी गई है, उनमें स्लीप वॉकिंग के चांसेस केवल 22.5% रहते हैं। रिसर्चर्स ने क्रोमोसोम 20q12-13.12 के एक जेनेटिक लोकस को आइडेंटिफाई किया है, जिसका स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर को पेरेंट्स के बच्चों में इनहेरिट करने में যেতিয়া আমি কিবা নতুন চেষ্টা কৰোঁ, মানুহে কয় মূল্যৱান তোমাৰ প্ৰত্যেকটো বাইটত আছে মজাদাৰ চকলেটৰ আনন্দ আৰু জবৰদস্ত ক্ৰাঞ্চি ৱেফাৰৰ মজা। মূল্যৱান ষ্টেকৰ ক্ৰাঞ্চ। बहुत दुबई देखा बाकी Government or corporation, we'll talk more about that, but you're lending money, and they are agreeing to pay you normally a fixed interest rate for the term of the bond. So let's see how this might work. We can imagine we'll do like a 10-year timeline, and you invest $1,000 in a bond today, let's say, and we'll assume this is all the way over here is 10 years. We'll just assume this is a 10-year bond. Well, what does that mean, a 10-year bond? Well, what it means is that each year, and it's usually, for the most part, interest on a bond is paid twice a year. And so you're going to get interest, and we'll just assume the interest rate on this bond is 2%. And they actually call that the coupon rate. And that harkens back to the day when bonds were actually in paper format. You may have seen, like on
college campuses or in your neighborhood where someone wants to advertise something and they've got those little, they have a piece of paper on a telephone pole and they have those little tabs at the bottom where you can tear off their phone number. Well, that's kind of how bonds work. And each one of those little tabs is called a coupon. You tear it off and literally present it to the issuer of the bond to get your interest rate. Well, that term, of course, everything's digital today, but they still use it. So coupon rate, right? And we'll assume in our example, it's 2%. And so you would get interest effectively every 6 months. 2% of $1,000 is, what is it? It's $20. Is that all? Yeah, it's not a lot of money. I started to say 200. I'm pretty sure that's 20% of 1,000. So whatever the interest is, you're going to get that every 6 months, right? And then if we fast forward all the way to year 10, you're going to get the last interest payment, and you're going to get the return of your $1,000, okay? And so some of the terminology they would use, they'd say the 10 years, they would say this is the maturity. This is when the bond matures, which is just the term they use for saying, all right, the term is up, here's your last interest payment, and here's your $1,000 back. So you can think of this as most bonds as interest only, right? And then the principal gets paid back at the end. So in this case, you know, it's a 10-year bond, has a maturity of 10 years. You're going to get interest typically. I've been a financial expert for over 30 years, and I can tell you, the most powerful market in the world, it isn't the stock market. It isn't crypto. It isn't whatever shiny thing Wall Street is hyping this week. It's the bond market. See, worth over $100 trillion, it quietly decides your mortgage rate, your taxes, your retirement returns. And it does it without asking your permission. Well, by the end of this episode, you'll know exactly what the bond market is, how it works, why it actually matters, and how it impacts every single part of your financial life. You can actually use it to your advantage instead of getting blindsided by it. We're going to break it down step by step from what the bond is, how it's prices, what are yields, and how they play tug of war, and to understanding how this boring market can actually be the biggest threat or boost to your money machine. This is Building Your Money Machine, where we help you master your money, eliminate financial stress, so you can live a life by choice. Because earning more doesn't make you free. A money machine does. And that freedom, it doesn't start with your next raise or your next paycheck. It starts the moment your money works harder than you do. Think of this as a bit of financial education with a side of sarcasm and a whole lot of heart. And I'm your host, Mel Abraham. Let's do this. इन्वेस्टर्स हमेशा चाहते हैं कि मार्केट की न्यूज़ उन्हें सबसे पहले मिले, क्योंकि एक छोटी सी हेडलाइन भी स्टॉक के प्राइस को इंस्टेंटली मूव कर सकती है। मैक्रो न्यूज़ के लिए एक साइड, माइक्रो के लिए दूसरी, आईपीओ अपडेट्स कहीं और फिर जब तक सब एनालाइज करो तब तक मूव ऑलरेडी निकल चुका होता है। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है स्कैनिक्स का न्यूज़ सेक्शन। यहाँ पे आपको मिलती है सारी मार्केट न्यूज़। Here's what you've been told. Bonds are boring. They're for your grandma's retirement portfolio. Yeah. And water is boring until your house is on fire. Bonds are literally the economy's thermostat. They decide how hot or cold the money feels. They set the borrowing costs for everyone. You, me, the government, that neighbor who says, in crypto now, okay? And when yields spike, housing slows down. Stocks stumble. Even Bitcoin gets a case of the chills, okay? Bonds aren't boring. They're actually the boss. The stock market just shakes its can for the tips. That's the reality. So what is it? What is a bond really, okay? Well, a bond is basically an IOU. It's an IOU in a power seat. You are lending someone money when you buy a bond. It could be the government, it could be a company, it could be whoever. They promise to pay you back, and they promise to pay you interest at a specific date. Now, there's components to a bond. There's 4 terms that we'll throw around here, but they're important to understand. And that is this: principal. Now, principal is the money you loan to them. It's what we call the face value of the bond. That's the amount of it. The coupon is the interest they pay you. The maturity is the date they give you the money back. Every bond has a specific maturity on it where you know you're going to get your money back in the interest. And then the yield
is what you actually make after factoring in what you bought the bond for, okay? Now, here's where things start to get a little nutty or crazy or bends your mind, is that there's a relationship between bond prices and bond yields. As the bond price goes up or down, the yield changes. That also can be said a different way. When interest rates rise or go down, it affects the price of bonds. The bond prices will go up or down with it. So for instance, when interest rates are increased, the price of a bond drops. When rates are brought down, the price of the bond climbs. So here's how to think about these things. The face value of the bond, which is what the borrower promises to pay back at maturity. That means that I'm going to buy a bond for, say, $10,000 or $1,000, let's just say. And maybe it's a corporate bond. It could be to Google. I don't know. So effectively, Google's borrowing $1,000 from me. And they promise to pay it back in 5 years. That's the maturity. So it's that $1,000 you're going to get at the maturity date. The coupon rate is the interest rate that they pay on the bond. So that's a fixed percentage of the principal. So if it's $1,000 bond and that coupon rate is 5%, you're going to get $50 in interest per year. Okay? And so that's how that plays out. Now, how does price and yield come into this? Well, bonds are traded kind of like stocks. And the price of the bond isn't the $1,000. It could be, but it could be less or it could be more. And the price is where the bond is trading for that day in the market. And it could, like I said, it could be higher or lower than the face amount. So here's how this happens.